बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the new lesson. अरबी का नया लेसन शुरू हो रहा है। उम्मीद है आपने पिछले लेसन्स को देखा होगा, पढ़ा होगा और आपने पसंद किया होगा। अभी जो ये लेसन शुरू हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आप गौर से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लेसन्स और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। Here it is, Ismun. And it is a very good chapter. You will love to, study these things. Like an English noun, an Ismun, that is the Arabic noun in the Arabic language, can be a person, place, thing, animal, idea, or even more. Right? In English, we have learned that a noun is the name of a person, place, thing, animal, idea, or name of anything. Actually, noun means name. Noun means name. Noun means name. And I'm giving you the simplest definition of noun. I am giving you the simplest definition. There can be no simpler definition than that of noun in English grammar. And you will not find it anywhere. Now, see, what is that definition and why I am giving that definition? Dekhiye. Noun has come from English grammar, from Latin nomen. Nomen means name. Nomen means name. So, noun is name. In English grammar, the word is noun. In English language, the word is name. In Hindi language, the word is sangya. In Urdu language, the word is naam. And what is the word in Sanskrit for name? I mean, not Sanskrit. Tamil for name? Pair. Pair. And what do you call Mohsin in Marathi? Name? Now. Now कहते हैं. Okay. I am giving you these examples. A word which is pair in Tamil is a noun. Any word which is pair in Tamil, it is a noun. Any word which is na in Marathi, it is noun in English grammar. Any word which is naam in Urdu or ism in Urdu or in Arabic, that is noun in English grammar. Any word which is a name in English language, any name in English language is a noun in English grammar. समझ गए? Any name in English language is a noun in English grammar. So noun is a grammatical word for name. Noun is a grammatical word for name. आप जिस चीज को भी name कह सकते हैं, that is noun. Noun is name. The definition is noun is name. Simplest definition. Any name is noun. What? Similarly, in Arabic also, name is ism. Ism is noun. Correct. It is really any word that gives a meaning by itself and that is not associated with any time period. One thing I would like to tell you, that ism or noun gives meaning, but it is not associated with time. उसका relation, उसका connection time के साथ नहीं है. जैसे for example, if you say playing, खेलना, playing is a fun.
प्लेइंग इज अ फन। तो ये जो प्लेइंग है इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस प्लेइंग इज अ फन, यहाँ प्लेइंग का कोई कनेक्शन टाइम के साथ नहीं है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज व्हाई हियर प्लेइंग इज अ नाउन। अंडरस्टैंड? तो नाउन का कोई भी कनेक्शन, नाउन इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी टाइम पीरियड, मींस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। Now look at some examples. Muhammadun is a noun. Insanun is a noun. Jamalun is a noun. Mauzun. Mauzun means it's a new word. Topic. You should keep a notebook and write down the meaning of the words. Mauzun means banana. Banana. Okay? Makkatu. Makkatu. What does it mean? Makkatu is the name of a place in Saudi Arabia. Yeah, it's the name of a city. Tuffahun. Tuffahun is apple. Tuffahun is apple. सर यहाँ पर मक्कतू का है सर? हाँ, that I will tell you. अभी आपको है कंफ्यूज सर। अभी आपको वो बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ मक्कतू समझिए उसको, है ना? जी हाँ, अभी मक्कतू समझिए वो क्यों हुआ, वो हम आपको बताएंगे। जी ठीक है? क्योंकि वो एक वर्ड मजबूरी में हमको फेमिनिन लिखना पड़ा है। ठीक है? क्योंकि नाम है ना, वो फेमिनिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फेमिनिन है, और फिर उसके लिए हमको फेमिनिन समझाना पड़ेगा, और फिर एक ही वर्ड तनवीन आई मीन दम्मा क्यों है वो समझाना पड़ेगा। एंड इट यू विल लर्न इट जस्ट इन 2-3 chapters you will learn it. Tufahun is an apple. Naharun is a river. Naharun is a river. Jamalun is a very good. Jamalun, very good word. Jamalun means beauty. very good. Jamalun, Beautiful. beauty, Beauty. not beautiful. Not beautiful. It is beauty. Jamalun Beauty. means beauty. Beauty. Sundarta, खूबसूरती, right? So all these words are nouns. ठीक है ना? Beauty is the name of a property. Beauty is the name of a property. So it's a noun. Jamalun is a noun. Naharun is a noun. Tufahun is a noun. Makkatu is a noun. Mauzun, banana, is a noun. Jamalun, camel, is a noun. Insanun, human being, is a noun. Muhammadun is a noun, proper noun. Now, on hearing each of these words, you know that it means, you know what it means. Hence, each of these words indicate a meaning by itself, and that meaning is not attached to any time period, present, past, or future. Correct. And the same definition is written in English. In Arabic, al-ismu huwa al-kalimatu. Ism is that kalima allati which tadullu ala manan, that refers to meaning fi nafsiha, on its own, wala taqtarinu bi zamanin, and it is not associated with any time period. It's not needed to remember the definition. You don't need to remember the definition in Arabic. Okay, just understand what is a noun. सर हाँ, थोड़ा उर्दू में भी इसको बताइए। ये जो अल इस्मु है, ठीक है, बताते हैं। अल इस्मु यानी इस्म, द इस्मु, हुआ कलिमतु, वो कलिमा है, अल्लती, जो, तदुल्लु अला माना, जो के माना पे दलालत करता है ना, फी नफ्सिहा, खुद से, वर्ड खुद से माना की दलालत करता है, वला तख्तारिनु बि ज़मान, बि ज़मानिन, और किसी भी जमाने से मुताल्लिक नहीं होता, किसी भी जमाने से मुताल्लिक नहीं होता, नहीं होता, न पास्ट, न माजी, न प्रेजेंट, हाजिर, और न ही फ्यूचर, मुस्तकबिल। ठीक है, समझ गए?
जी ये डेफिनेशन जी याद करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू मेमोराइज द डेफिनेशन. Now, look at some more examples. These are all nouns. Kitabun is a noun. Al-Kitabu is a noun again. Fatimatu, again you see Fatimatu. नॉन Fatimatu is a noun. नॉन Anta, you, जी now. अब यहाँ देखिए आप, very good thing. Anta means नॉन हो you. गया. Anta means you. ये You is a pronoun in English. You is a pronoun in English. And in Arabic, anta, that is for you, is a noun. So pronoun of Arabic language, of English language, is a noun, is ism in Arabic. जो भी pronoun है नॉन इंग्लिश में, he, she, it, I, we, you, they, सब के सब अरबिक में इसम है, नाउन है. इसमें होगा. समझ ये गए? नॉन जो भी pronoun है वो सब नाउन है. Now, another word, नॉन qadimun. जी Qadimun means old. Mr. नॉन Mohsin, you are hearing me? Qadimun, yes sir. Qadimun is, Qadimun means old. Old. And old is an adjective. English जी grammar में old क्या है? Adjective है. एडजेक्टिव है. है ना? Because किसी की जी property बता रहा है ना? तो ये adjective है. But in Arabic ये ism है. Noun है, right? It's a noun. So नॉन we learned that noun of English language is noun in Arabic. Pronouns of English language are nouns in Arabic. Adjectives of English language are nouns in Arabic language, right? तो जो adjective हम यस पढ़ते सर. थे इंग्लिश में वो सब noun है अरबिक में. नॉन है. Qadimun is a जी noun, सर. ism. Kabirun, big, adjective. ये भी जो है वो जी नॉन नाउन है. नॉन है. अब इस वर्ड को देखिए, जी फौका. फौका, भी नॉन हो जाएगा. ये क्या है इंग्लिश में? अबव. एडवर्ब है. एडवर्ब है. एडवर्ब एडवर्ब है. एडवर्ब ऑफ प्लेस. जी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बताने वाला एडवर्ब है ना. तो अबव जो जी है, अबव, अबव, ये क्या है? एडवर्ब. तो एडवर्ब है. अबव जो हुआ वो हमारे यहाँ अरबिक में क्या हो जाएगा? नाउन, इसम. नॉन हो जाएगा. फौका, है इसमें ना? फौका. जी और एडवर्ब फौका. के लिए अरबिक में हालांकि वर्ड है, और वो वर्ड है ज़र्फ, ज़र्फुन. प्रोनाउन के लिए वर्ड है हमारे इन अरबिक तमीरुन, तमीरुन, राइट. एंड एडजेक्टिव के लिए वर्ड है सिफातुन और नातुन. सिफातुन और नातुन, ये कह सकते हैं. और एडवर्ब के लिए वर्ड है हमारे पास, क्या है वो? ज़र्फुन. वेरी गुड. these haulai, haulai means नॉन. दिस it's a pronoun है. जी कौन सा pronoun है? these, it is the plural of this. तो ये कौन सा pronoun है? थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन है, but it's a demonstrative थर्ड पर्सन. pronoun. It's a demonstrative pronoun. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. जी Plural हाँ of this. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. जी But in Arabic it is ism. डेमोस्ट्रेटिव. In Arabic it is इसमें ism. है ना? और जमीर जो बताया सर, जमीर क्यों नहीं कर सकता? ज़मीर is pronoun. वो जी भी noun है. वो भी noun है अरबिक में, इसमें वो. ज़मीर भी इसलिए इसम कहा है. जाएगा उसको. जी, ज़मीर जी is also ism. ज़मीर जो है वो इसम है अरबिक में. और जी सिफत भी इसम है अरबिक में. सिफत भी इसमें इसम है अरबिक में. इसमें है. And yeah, जी and zarf is also ism in Arabic. And ismul जी ishara, demonstrative pronoun, is ism in Arabic. सब इसमें. ism के कैटेगरी में है. Understand? जी Now, because ज़मीर कोई काइंड नहीं है ना अरबिक में. वर्ड्स के आपने अभी पढ़ा ना, अनवाउल कलिमती सलासतुन. क्या पढ़ा? जी अनवाउल कलिमती कलिमत सलासतुन. सलात. There are only 3 types of words in Arabic: ism, जी सर. fail और harf.
डू यू नेम एनी ज़मीर हियर? कोई ज़मीर का नाम सुना इसमें आपने? ये नहीं सुना ना। इस्म फ़ेल हर्फ कितना है? इस्म फ़ेल हर्फ, ज़मीर है, सिफत है। इसमें सर पहले वाला अनवाउल कलिमतिन फी लुगतिल अरबिया वाला चैप्टर में सर ये इंग्लिश का ही तफसील किया है। राइट। और इंग्लिश में जो प्रोनाउन है उनका नाम इंग्लिश अरबिक में क्या है वो लिख दिया गया। ठीक है। दे आर एक्चुअली ज़मीर बट दे आर categorized as ism because Arabic has got 3 kinds only ना, 3 ही है ना। तो ज़मीर्स are also categorized as noun। वो ज़मीर को वर्ब में नहीं, फेल में नहीं डाल सकते, हर्फ में नहीं डाल सकते, तो कहाँ डालेंगे? इसम में डालेंगे, है ना। राइट। Now antum is a plural noun, plural pronoun meaning you all. Antum, you all of you. So it's damir, and damir is ism in Arabic. Saghirun is adjective. Saghirun is adjective, and there is ism in Arabic. Ism in Arabic. Now there are some questions. What is the noun? Ma huwa al-ismu? आप इंग्लिश में डिफाइन कीजिए, अरबी में नहीं कर पाएंगे। Noun is name. Noun is name. Right. Give 5 examples of the noun. Can you give 5 examples? Qadimun, kabirun, fawqa, antum, saghirun, fatimatu. Correct. These are the examples. Very good. No. उम्मीद है आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे कॉन्टैक्ट के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी सुफ़ा स्मार्ट स्कूल की तरफ से और सुफ़ा ग्लोबल क्लासरूम की तरफ से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लगातार आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके।